Hello everyone, welcome to Ansarkari. So in this video we'll be dealing with the next set of questions of highest common factor and least common multiple. So the first question says find the two largest numbers of 4 digits having 531 as their highest common factor. So basically in these type of questions what is important to understand is that the highest common factor can either be the difference of the two set of numbers that we have been given, or the highest common factor can be any of one or like out of the factors of that particular difference, any one of those factors can also be the highest common factor of those two particular numbers जिनका कि हमने डिफरेंस निकाला है. अब 4 डिजिट के तो ये सारे ही हैं, बट वट वी नीड टू फाइंड आउट इज़ द लार्जेस्ट नंबर. तो हम लार्जेस्ट ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं सबसे पहले, एंड वील फर्स्ट ट्राई टू एलिमिनेट दोज ऑप्शंस जिनका कि डिफरेंस 531 नहीं है. विल चेक फॉर देम लेटर ऑन. तो ए ऑप्शन से जब हम ट्राई करते हैं, इफ़ यू ट्राई टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 9231 एंड 9762, इनको सब ट्रैक करने के बाद हमें जो डिफरेंस मिलता है, this is equal to 531, which means that these two can be those two largest numbers जिनका की जो डिफरेंस है वो 531 है. तो जो 531 है वो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है. these can be those two numbers for the answer. बट वट बिकम्स इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ डिफरेंस से काम नहीं चलता. वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट बोथ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 531. अगर वो डिविजिबल ही नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो दैट इज अ नेक्स्ट थिंग, राइट. So first we'll check whether both these numbers are divisible by 531 or not. So first we'll be checking this with the number 9231. तो अगर डिफरेंस 531 होएगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका कि एच सी एफ 531 है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर टेकिंग द फर्स्ट ऑप्शन एज अ ट्रायल. एंड इनका डिफरेंस भी 531 है. सो विल राइट हियर 9231 एंड इसकी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 531 से. तो अगर ये 531 से डिविजिबल है, यानी कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है, दिस वुड मीन कि हाँ एटलीस्ट डिवाइड कर पाए. देन द नेक्स्ट थिंग ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि क्या ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 9231 का और 9762 का. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू चेक. सो फर्स्ट वील डिवाइड दिस पर्टिकुलर नंबर एंड राउंड ऑफ अगर हम करके देखें तो ये 17 से जा रहा है. सो वील मल्टीप्लाई 531 बाई 17 एंड देन वील गेट 7 1 carry me 2, then we have 7 3. And after adding all these, the difference that the sum that we will be getting is will be equal to 9027, यानी कि 9027 आ गया हमारा, which means that ये number तो नहीं है divisible. So after subtracting we get the remainder as 204. So since the remainder is not 0, it clearly shows us that this particular number, that is 9231, is not divisible by 531. तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता. एंड सी इफ वी चेक विद द अदर ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल हियर वी हैव 9127 9658, तो नेक्स्ट ये हो जाता है, राइट, द डी ऑप्शन. बट इन दिस केस ऑल्सो सी सिंस वी हैव 9027 हियर, तो 9027 और 9127 में 531 से तो कम का ही गैप है, विच मीन्स दैट इवन दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 531. एंड सेम इज़ द केस फॉर 9037 जो कि सी ऑप्शन में है. तो यानी कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, एंड हेंस दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यानी कि 9027 हो रहा है तो ये एक ही ऑप्शन बचेगा. सो वी डू नॉट इवन नीड टू चेक फॉर 9558. Hence, then this question here says find the greatest number of 5 digits which becomes exactly divisible by 10, 12, 15, 18 when 3769 is added to it. तो अभी कह रहे हैं कि ऐसा greatest number बताओ which is of 5 digits. So we know that the greatest 5 digit number is this, which becomes exactly divisible by all these numbers. So यानी कि हमें इनका LCM सीखेगा. And why we need the LCM, the multiples of everything is explained in the previous videos. So do watch them in order to understand better. Then they say when 3769 is added to it. तो यानी कि इस number में when we add 3769, then this whole number becomes exactly divisible by all these possible numbers, right? So first we'll add these. For example, we'll add 3769 to this particular number. So here we get 18, then we get 16 here, and then we get 17,
we get 13 and here we get 10. तो यानी कि ये हमारा नंबर हो जाएगा विच वी वांट के डिविजिबल. उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल व्हेन वी ऐड दिस इनटू इट. वो ये नहीं कह रहे कि फाइनल नंबर शुड बी ऑफ 5 डिजिट, right? They're not saying this. So now we'll find out the LCM of 10, 12, 15 and 18. These are the 5 numbers given here. So 10 can be written in the form of 2 multiplied by 5. 12 we can write as 2 raised to the power 2 multiplied by 3. 15 we can write as 5 multiplied by 3 and 18 we can write as 3 raised to the power 2 multiplied by 2. So least common multiple becomes 2 raised to the power 2 multiplied by 3 raised to the power 2 multiplied by 5. So it becomes 4 multiplied by 9 multiplied by 5 and this becomes 20 and then 9. So it becomes 180. यानी कि 180 जो है वो least common multiple है in numbers का. Which means that when we divide all these numbers, when we divide 180 by all these numbers, then the remainder that we get will be equal to 0. यानी कि ये जो number है ये least ऐसा number है जो कि completely divide हो रहा है इन सब से. 180 से कोई भी छोटा नंबर ऐसा नहीं है जो कि इन सबसे completely divide होता हो सबसे, right? So now see if we make multiples of 180, for example अगर हम 180 को 1 से 2 से multiply करें या फिर 3 से करें या फिर 10, 11, 12, if you multiply 180 by any such number, then that number will also be divisible by all these numbers, and I have explained this in the previous videos. So this is the same concept that is being used here in this question. Now they are saying कि अब जो ये LCM है obviously we'll divide this particular number by the LCM to check कि क्या ये number divide हो रहा है नहीं, because this is the greatest possibility, right? And if not, then जो remainder आएगा we'll subtract the remainder from this particular number, क्योंकि यही एक possible greatest number है. क्योंकि जो 5 digit का number ये तो देखो हमें दे ही रखा है. Then they are saying the greatest number of 5 digit which becomes exactly divisible by all these numbers, उसके लिए हम इससे check करेंगे when 3, 7, 6 and is added to it, which means that जो ये number आएगा ना, we need to make this number a multiple of 180 ताकि वो inside numbers से completely divisible हो. So we'll write here 180 and then we'll write this number here 6 and 8. So first it will go by, so this number is near to 200. So if you make the approximation, it can go somewhere near to 4. So 18 fours is equal to 720. Right, so 184 will be equal to 720. So we can write here, and if we add 180 to it, यानी कि अगर हम 5 से करें, then it becomes 900. So हम 5 लिख देते हैं यहाँ पे, and it becomes 900. So it becomes 7, 3 and 1. Then 6. So again this is near to 200. So 5 तक तो हमने देख लिया 900. So most probably it will go by 7. Now this 180 will go by 6, which becomes 1080, and hence the remainder that we get is equal to 88, which means that we need to subtract 88 from this particular number so that the resulting number रहेगा that is divisible by 180. और अगर वो 180 से divisible है तो it will be divisible by all these numbers as well. And हमने यहाँ 9 करके ऐसे ये वाला number इसलिए लिया because they're asking the greatest number of 5 digits, and greatest number is always in the form of 9 nines, and whenever we talk about smallest number then they are in the form of 100 and so on. So the answer for this particular question will be, see, we'll subtract 88 from this particular number, 88 from this particular number, and hence what we'll get will be equal to, we can write here 768, and when we subtract here 88, this becomes 0, then this becomes 8, this becomes 6, 3, 0, 1. अब इसमें से हमें subtract करना है 3769, because हमें तो greatest number of 5 digits चाहिए, right? We need this number x जो हम assume करके चलते हैं. So when we subtract this, here we get 1 and here we get again 1 because it becomes 7 here after carry. This here becomes 1, 2, this becomes 9 here. So it will also become 9 and this becomes 9, which means that 99911 will be the answer to this particular question. Thank you.